तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो जियोग्राफी का एक और टॉपिक है, दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इन आवर एवरीडे लाइफ, इन आवर डे टू डे लाइफ वी यूज मनी रिसोर्सेज ऑन विच वी मेंटेन आवर सर्वाइवल। तो जिंदगी में हम हर दिन हर रोज बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, तब जाके हम अपनी सर्वाइवल मेंटेन करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले जो इसका टाइटल है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसमें से हम सबसे पहले रिसोर्स को टारगेट करेंगे कि रिसोर्स असल में होता क्या है। अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट एंड सेटिस्फाइज आवर नीड इज टर्म्ड एज ए रिसोर्स। अच्छी डेफिनेशन है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। मगर चूंकि जो 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा इस डेफिनेशन में हमें इजाफा करना है, तो हम कुछ इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट and is technically accessible, economically feasible and culturally acceptable is termed as a resource। तो इसे हम रिसोर्स कह सकते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, so we can say anything present in our environment which is technically accessible, comma economically feasible and culturally acceptable is termed as a resource। तो ये इसकी डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। हर कोई चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होती है, हर कोई वो चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होती है, जहां पे हमारी एक्सेस हो, जिसको हम वहां से जमीन के अंदर से निकाल सकते हैं, उस पे टेक्नोलॉजी अप्लाई करके उसे वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन ओर, बॉक्साइट, कोल, पेट्रोलियम, these are resources only when we use them। These are resources only when we make a use of them after the extraction from the earth's crust with the help of the technology। With the help of the technology, it means technically accessible, economically feasible। Economically हर एक इंसान, हर एक ह्यूमन बीइंग अफोर्ड करना चाहिए, उसे मार्केट से खरीदना चाहिए, तो उसे हम कह सकते हैं ये रिसोर्स है, ठीक। और कल्चरली सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। कोई ऐसी चीज ना हो जिससे सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जब ये सारी चीजें हम एक्यूमुलेट करते हैं, जब ये सारी चीजें हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और हमारी नीड ये पूरी करते हैं, तो हम कहेंगे इट इज ए रिसोर्स, इट इज ए रिसोर्स। तो रिसोर्स के बगैर हम अपनी जिंदगी का सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए व्हाइट मार्कर बोर्ड पेन। बाय दिस पेन आई एम एबल टू राइट ऑन द व्हाइट मार्कर बोर्ड। सो दिस इज ए रिसोर्स, इट सेटिस्फाइज माई नीड, इट सेटिस्फाइज माई। जब मैंने इसका इस्तेमाल किया और बच्चे बआसानी बोर्ड पे इसको इमिटेट करते हैं, तो इसने मेरी भी नीड पूरी कर दी और बच्चों की भी नीड पूरी कर दी। ये रिसोर्स है। These clothes, these are resources। Why? It protects my body from the severe winter and the dry and hot climate। These clothes are resources।
This white marker board, this is a resource because it satisfies my need. All the things that are present in our environment, and when we make use of them, they satisfies our need. We can say that very much thing it is a resource. It is a resource. And these resources are classified on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of stats of development, etc. and on the basis of ownership. हम इन रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना, इनकी कैटेगरी बनाते हैं बहुत सारी ये बेसिस पर. फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊंगा आपको ओरिजिन की बेस पे, ओरिजिन वजूद की बुनियाद पर हम रिसोर्सेज को दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, दो हिस्सों में. रिमेंबर इट, द वन इज बायोटिक रिसोर्सेज and the second one is abiotic resources. On the basis of this origin, we classify our resources into two main categories, that is biotic and abiotic. And we all know that biotic resources are those resources which are obtained from biosphere, which are living by nature, and they get continuously replenished and regenerated. And abiotic resources are those resources which are mainly considered to be the non-renewable because they get exhausted by the overuse of human beings. And the second thing, on the basis of renewability, on the basis of this renewability, we classify our resources into two main categories. You all know that the one is a renewable resource and the second one is non-renewable resource. Non-renewable resource. So on the basis of origin, we classify our resources into two main categories, namely biotic and abiotic resources. On the basis of renewability, we classify our resources into renewable and non-renewable resource. The third thing, on the basis of ownership, ओनरशिप की बेस पर हम अपने रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं चार हिस्सों में, दैट इज इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, national resource and international resources. ये रिसोर्सेज जो होते हैं, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जब हम इनको ओनरशिप की बुनियाद पे देखते हैं तो हम इनको इंडिविजुअल रिसोर्सेज में क्लासिफाई करते हैं. व्हाट आर इंडिविजुअल रिसोर्सेज? Individual resources are those resources which are owned by a single person. For example, these clothes belong to me. These clothes belong to me. So this is an individual resource and these clothes belong to me. After that, it comes community resources. जब हम अपने समाज की तरफ नजर डालते हैं, प्लेग्राउंड होता है जहां पे सारे बच्चे खेलते हैं, तो वो कम्युनिटी रिसोर्स होता है, वो सारी सोसाइटी का होता है. हमारे यहाँ पे ग्रेव यार्ड होता है, कब्रिस्तान फॉर एग्जाम्पल, जहां पे हम अपने मुर्दों को दफनाते हैं, ठीक, तो इस कब्रिस्तान को सारे लोग, अब एक समाज के तमाम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तो ये कम्युनिटी रिसोर्स है. इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल कोई पब्लिक स्कूल होता है जिसमें एक कम्युनिटी के सारे बच्चे पढ़ते हैं या पढ़ सकते हैं, तो वो कम्युनिटी रिसोर्स होता है. तो ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप हमने इंडिविजुअल रिसोर्सेज भी देखे, हमने कम्युनिटी रिसोर्सेज भी देखे. अब इसमें थर्ड कैटेगरी आती है नेशनल रिसोर्स. तो नेशनल रिसोर्स कौन से रिसोर्सेज होते हैं, ये आपको समझना है. यहाँ पे नेशनल रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जो एक कंट्री की मेन लैंड में पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया,
अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान की जो मेन लैंड है, ठीक, वहां पे जितने भी रिसोर्सेज निकलते हैं वो नेशनल रिसोर्सेज कहलाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोल डिपॉजिट्स हैं, पेट्रोलियम है, आयरन ओर है, बॉक्साइट है, लाइमस्टोन है, ठीक, या सैफायर है। इसके अलावा भी फॉर एग्जांपल गैस निकलता है। ये सारी चीजें जो होती हैं ये नेशनल रिसोर्सेज होती हैं जब ये एक कंट्री की मेन लैंड में इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक बात, दूसरी बात जो यहाँ पे आपको खास याद रखनी है वो ये कि फॉर एग्जांपल दिस इज पेनिनसुलर इंडिया, यहां से इसको बे ऑफ बंगाल है और यहां से अरेबियन सी है। जब आप ईस्टर्न कोस्ट की बात करोगे, यहां से ईस्टर्न कोस्ट से अगर आप 200 नॉटिकल माइल्स बे ऑफ बंगाल में जाओगे, यहां तक जितने भी रिसोर्सेज निकलेंगे वो हिंदुस्तान के रिसोर्सेज कहलाएंगे। और इसी तरह से जब हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं, जब हम 200 नॉटिकल माइल्स वेस्टर्न कोस्ट से अरेबियन सी की तरफ आएंगे तो जितने भी रिसोर्सेज इस एरिया में निकलेंगे वो भी हिंदुस्तान के रिसोर्सेज कहलाएंगे। इनको हम कहते हैं नेशनल रिसोर्स। तो आफ्टर ऑल टुडे इन दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड दैट व्हाट इज ए रिसोर्स। इसको हमने डिफाइन किया, एनीथिंग प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट दैट इज टेक्निकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज टर्म्ड एज ए रिसोर्स। आफ्टर दैट हमने क्या किया, हमने रिसोर्स को कैटेगराइज किया डिफरेंट कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, रिन्यूएबिलिटी एंड ओनरशिप। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर we will discuss the resource and development furthermore. So for watching that lecture you have to subscribe my channel, namely Branded History, and you have to like and comment and give your opinions and suggestions to make the lecture more beautiful and handsome.